जय माता दी दोस्तों। शुभ नवरात्रि। अष्टमो अध्याय। ध्यानम। ओम अरुणाम करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशांकुशबाणचापहस्तां अणिमादिभिरावृतां मयूखैः मित्येव विभावये भवानीम्। ओम ऋषिरुवाच। दैत्ये च निहते चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेश्च सैन्येषु क्षयितेषु सुरेश्वर तथा कोपराधीन चेता शुंभ प्रतापवान उद्योगम सर्वसैन्यानां दैत्यानां दिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षट्शत्रुदायुधः कम्बूनां चतुर्शीत् निर्यान्ति स्वबलैर्वृता कोटिवीर्याणि पंचाशत् सुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौहृदा मौर्या कालकेयास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञा त्वरिता मम इत्याज्ञाप्य सुरपति शुंभो भैरव शासनः निर्जगां महासैन्यं सहस्रै बहुविवृता आयान्तं चण्डिकां दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यासुनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम्। तथा सिंहो महानाद मतिः कृतवान् नृप घंटासुनेन तन्नादम्बिका चोबृहत् धनुर्जा सिंह घंटानां नादापूरिततिं मुखा निनादैर्भीषणैकाले जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुत्सृत्य दैत्यसैन्य चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सर्वस्वै परिवार्ता एतस्मिन्नन्तरे भू विनाशाय सुरदिशां भयमरसिंहानां मतवीर्यबलान्विता। ब्रह्मेश गो विष्णूनां तथेन्द्रश्च च शक्त्या शरीरे उभो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्देहि तच्छरिक्तं सुरान् युद्धं माययो हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलो आयाता ब्राह्मणा शक्ति ब्रह्माणी साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणे महाहिवल्या प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्ति हस्ता च मयूरवरवाहना योधुधमभ्यायो दैत्यानंबिका गुहरूपिणे तथैव वैष्णवी शक्तिर्गणोपरि संस्थिता शंखचक्र गदासारं खड्गहस्ताभ्युपायो यज्ञवाराहमतलं रूपमेव बिभृतो हरे शक्तिसाप्यो तत्र वाराहिं बिभृति तनुं नारसिंहेन सिंहस्य वृत्ति सदृशं वपो प्राप्ता तत्र सटाच्छेप क्षिप्त नक्षत्र संहति। वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा तथा परिवृतास्थाभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यतां सुरां शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकां ततो देवी शरीरात् विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा च धूम्रं जटिलम् ईशानं पराजिता तथा दूतत्वं गक्ष भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो ब्रूशुम्भं निशुम्भं च दानवावार्ति गर्वितो ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तुं हविर्भुजा युवं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छते बलावले पादच्चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणा तदा गच्छत्रिप्यन्तु मत्स्यवापिष्टेन वा यतो नियुक्तो दैत्येन तया देव्या शिवा स्वयं सुदूतीति लोके अस्मि सता साख्यातिमागता। तेऽपि श्रुता वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमर्षा पूर्ता जगमुर्य त्रिकात्यानि स्थिता तथा प्रथमेवाग्रे सरसक्रियष्टि वृष्टिवे वोर्षरुद्धतामर्षतां देवी मरारया सा च तान् प्राहितान् बाणञ्छूल शक्ति परस्वतान् चिच्छ्यो लीलयामात् धनुर्मुक्तै महर्षिभुः तस्याग्रस्तता काले शूलपात विदार्तान् खड्वान् पोथितान् चाण्डीन् कुर्वती व्यचरत् तदा कमण्डलजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसा ब्रह्माणि चाक्रोच्छत्रून् येनेन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्याति कोपिना ऐन्द्रिकुलिशपातेन सत्सो दैत्यदानवा पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुद्रोत्प्रवर्षिणा तुण्डप्रहार विध्वंस दष्टाङ्गक्षत वक्षसा वराहमूर्त्या निप्तश्चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारितान् चान्यान् भक्ष्यन्ति महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बराः चण्डट्टहासैरशुरा स्युदूतविदूषिता पेतु पृथिव्यां पत्यांश्चखादात् सा तदा
इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दिष्टाभ्युपाय बिब्धै नरेशै देवारि सैनिका पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुद्धमभ्याक्रुद्धो रक्तबीजो महासुरा रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ यतस्तस्य रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतस्तस्य शरीरता समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुराः युधे सा गदापाणीन्द्रिशक्त्या महासुराः ततश्चन्द्रिसो वज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलशेनः तस्याशु बहुशुस्राव शोणितं समुत्तस्थु स्थितो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमा यावन्ता पतितास्ता सरिदा रक्तबिन्दवा तावन्ता पुरुषा जाता स्तद्वीरबलविक्रमा सा चापि युधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा समं मातृभिरत्युग्रं शस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन छद्मस्य शिरो यदा वाह रक्तं पुरुषा स्तुतो जाता सहस्रशा वैष्णवी समरे चैनन चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामासेन्द्रितं सुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्राव संभवे सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं सा चापि गदया दैत्य सर्वायव हनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरा तस्याः तस्य बहुधा शक्तशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तो घस्ते न संच्छत्सो असुरा तैश्चासुराश्चिक् सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाज्ञमुरुत्तमम् तान् विष्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रासत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीक्षं त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्ष्यन्ति चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेच्छयं दैत्या क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षमाणस्त्वया चोग्रा न चोत्पतिष्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगान्तं मुखेन काली च गृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा जगन्नाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातो अल्पिकामपि तस्याः तस्य देहातु बहुशुस्राव शोणितं यतस्तदिस्तत्क्वत्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षते मुखे समुद्गता ये यस्य रक्तपातान् महासुरान् तांश्चखदात् चामुण्डा पपोतस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरस्विरिष्टवे जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीति शोणितं सपपात महीपृष्ठे शस्त्रसंगसमाहता निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरा ततस्ते हर्षमतलं वाप विस्त्रीदशान्निप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता सिंह मदोद्दतां जय बिंदु अष्टमी एक जय मातेश्वरी की अष्टमो अध्याय जय मातेश्वरी जय बिंदु अष्टमी की जय दुर्गा माता की।